Hello. Hello. You all right? Now it's good. I'm audible now. All right, perfect. So, I was expecting it to dump within this, and then I would have entered longs, but I just failed to show up within that area. Came very close. Now it's at 80 pips. It's even if you would have entered here, 55 pips. Never mind. This high is supposed to go as I said. Uh, this actually, uh, like it moved as predicted, but it just fucked around for a really long time, like really, really long time, and that's EU for you. But if it push up higher, एक ऊपर flick आता है. I am planning to bet on shorts there. We'll see how it goes. But यार ये smaller time frame के हिसाब से यही पे entry बनती है, लेकिन it's like very much in the discounted area, so it's not really that of a logical entry. So that's the reason we would not be entering in this. Let's go to cold back again. Cold trying to retrace. Uh, let's see if it just show up within this area. I'll just plan. जैसे overall जो bias है मेरा personally, it's more inclined towards bearish. बाकी जैसे भी price बनती हुई दिखे हम उस तरफ भागेंगे. अगर एक बड़ा रिस्क एपेटाइट देना होता तो शायद मैं यहाँ पे एंटर करता, लेकिन 1:1 लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तो मैं एंट्री तो नहीं ले रहा इसमें. ठीक है. और बट लेट्स सी. यूरो का बस हम नीचे जाते हुए देख सकते हैं और कुछ नहीं. अगर तुम नहीं हो तो, अगर हो तो सही. Boys, like the stream. We have 7 people watching us. Consider liking the stream. Let's wait. So yesterday, what a day. What a trading day in US 100, man.
Very beautiful. Uh, I have capitalized trades on sell side. Mm, the fuck? Why I picked phone? Ah, yeah, I got it. Hmm.
Hello, hello, hello. Something is wrong. Now it's back again. Okay, cool. Hmm, 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 hmm. This is actually moving nicely. होल्ड में यार ये यहीं से भाग सकता है तो आई एम होल्डिंग नॉट रियली अ लॉट ऑफ क्वांटिटी आई एक्चुअली मतलब मैंने स्टॉप लॉस जब वो एकदम मेरे पास गया था स्टॉप लॉस के नो ब्रेक इवन पे पास आया था देन आई बुक्ड समथिंग इट वाज अराउंड लाइक 11:40 के आसपास कल रात को यार अभी दे ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते लेकिन हाँ मतलब मेरा इंटेंशन अभी फ़िलहाल के लिए ये कह रहा है कि अपन लॉन्ग्स के लिए देखेंगे जब ये नीचे आएगा तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो US 100 वैसे तो काफ़ी प्यारा सा बुलिश ही है ये so it has nicely retraced within the inefficiency, swept beautiful liquidity, still contained within the bullish leg, mitigated the extreme demand area. So everything that way is fairly logical. जैसे ही इसने ये स्वीप करा था और फिर यहाँ से बाइंग आई रिट्रेस करा प्राइजेस ने रिट्रेस करने के बाद वी अगेन स्टार्टेड पुशिंग अप हायर again we retraced tested the area now holding quite bullish the initial reaction from the area looks quite aggressive so that way it does make a lot of sense for us to continue to look for longs and eventually expect all of these above liquidity levels to be taken out. We have nice equal highs, fair amount of liquidity here. All of these levels would be a area of liquidity. So it's fairly possible कि हम अब एक actual true push to the upward direction देख सकते हैं, but it all depends on how this entire pre-market built up happens. तो उसके बेसिस पे हम सोच सकते हैं अगर हम ES देखें तो ES भी ऑलमोस्ट वही कह रहा है कि इट्स होल्डिंग क्वाइट वेल इट्स होल्डिंग बुलिश इन डेली टाइम फ्रेम हाई राइज हाई लोज फॉर्मेशन ब्यूटिफुली फॉर्मिंग so till the time it's holding this we'll continue to look for long so that way it is again logical all the internal liquidity got swept mitigation of the discounted area order flow building up so most probably during our session we will be looking for longs दैट इज़ वॉट आर इंटेंशन सीज बाकी तो चलता रहेगा जैसे मार्केट खुलता है वैसे देखते हैं
Boys, I think we might get a possible opportunity for entering in longs. Uh, ting 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 ting. We'll wait. We'll wait. We'll wait for another 20 minutes to see where the opening is of London. उसके हिसाब से हम देखेंगे. वैसे ही जैसे मैंने बोला अगर सेलिंग आए तो आई एम फाइन विद इट. बट मुझे सेलिंग थोड़ी प्रीमियम एरिया से करनी थी बिकॉज दिस इज अ वेरी फेयर पूल ऑफ लिक्विडिटी. सो विल सी. अभी डायरेक्टली नहीं घुसेंगे और लॉन्ग्स अपने प्लानिंग में नहीं है. ठीक है, मतलब ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है. 4590 4590 से planning to enter longs. Don't do it. If prices reach there, the chances of it taking out this liquidity is extremely high. Don't enter from this area. If prices do something within this or from here itself, it start building order flow, you think of entering from here. You know, if the prices decide to push down here, it's not too far कि prices ये liquidity भी sweep कर जाए. तो वो area is very risky. Of course, that's extreme discounted and all, but if the intent is to move higher, then इतना नीचे आने की ज़रूरत नहीं है प्राइजेस को. अगर इंटेंट एक्चुअली है ऊपर जाने का तो मैक्सिमम समथिंग विद इन दिस और like slightly lower than that, maybe just this and then push up. Let's wait for the opening. See, we are just trying to be sure before entry, so that's the reason we are not executing anything right here. वरना सेटअप तो यहाँ से भी बन सकता है, बट हम वेट करेंगे. दिया बेट तो बोलो ना बोलो क्या किया इनका लौड़ा है छो. बस ऐसे नाइस लोअर हाइज लोअर लोज लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए जा रहा है, बट इट्स वेरी लो इन द लेग, सो दैट्स द रीजन आई डोंट वांट टू. I watched that Krish song meme. So basically there's one guy जो कचरा उठाते मतलब गार्बेज बैग्स उठाते, फिर प्लास्टिक बॉटल्स उठाते और भंगार वाले को पीसते. सो दे सर्वाइव बेस्ड ऑन दैट, राइट. सो वो शायद दारू भी बहुत पीता है एंड ही इज़ लाइक थोड़ा सा शॉर्ट गाय. सो वो देखो ना, थोड़े से मेंटली सिक लोग होते हैं जो ये सारे काम करते हैं और ऐसे उनकी वेशभूषा और चेहरा काला कूड़ा पूरा लगा हुआ वैसा. ओके, इमेजिन दैट सॉर्ट ऑफ गाय. Oh, we can actually pull out that fellow's first video. Wait. So this fellow, okay, this is his first video. Okay, look at his Veshbhusha and all. Okay, so he's doing like this. A group of guys were standing, and I guess he just approached or they approached him. So he asked, कि किरिश का गाना सुनेगा. So they're like, सुना ना. So after that, like somehow that meme went really viral. ये पता नहीं आवाज. ओके. बेटा आगे ये मोस्टली फेमस हुआ है वो ले बेटा के वजह से. ले बेटा. तो
सही है, फिर a lot of people went to help him and all. लोगों ने तो और क्या कमाना, देन a lot of people approached him. जब जब वो दिखता था उसके वीडियोस बनाते थे. And this is also funny, okay? Then after that, everyone started asking him कि गाना सुना. Then he pretends कि वो फोन में ऐसे कुछ बोल रहा है, and this is also very funny. दोस्तों जरा गौर से नहीं, किरिश का पिक्चर दिल ना दिया, किरिश का पिक्चर दिल ला दिया. किरिश दोस्तों दिल ना दिया, दिल ना लिया, दिल. Funny. नादिया पता है? this ये भी एक मीम है. नीली परी पीली परी कमरे में बांध है, मुझे नादिया पसंद है, नादिया मैं थोड़ी थोड़ी. This is also a trending meme. Student from Moneyball, good to hear you. Hey Rakesh, how are you, bhai? How are you? Anyone in gold, like you guys are holding gold? My entire feed is filled with this guy. Abhi, there's this reel that going on, that tune. जिसमें एक जी वैगन में सारे गणपति बप्पा, राम जी, हनुमान जी सारे बैठे होते हैं. So that is again one of the trendy meme going on. Not meme, we can say it's trend बोल सकते हैं. Yesterday I took me out, उसके बाद गोल्ड. चलो ठीक है, कोई नहीं. अरे बहन का लौड़ा निकला भाई. गोल्ड बोल रहा हूँ, सॉरी, यूरो. If you are holding that solid, like what I am seeing, euro में I am seeing this low to be taken out and prices will reach within this. So I would really request you to extend your target, because इसने इतनी सारी बकचोदी बस ये लो ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाने को तो नहीं की है, ठीक है. इसने ये सारी बकचोदी उसलिए की ही नहीं है. इट विल जस्ट इवन गो डाउन लोअर, ठीक है. Sonaro, my father is holding more gold. That's solid. सही है भाई. तो भाई मेरा जो टारगेट है ना, वो मिनिमम है 5894. 5894 is what I am seeing to be taken out very easily. So that gives us almost 1:6. So I would really request कि ये सारी इसने जो भी करा है ना, ये इसके लिए तो नहीं करा कि बस ये यहाँ से ऊपर भाग जाएगा. I am definitely seeing these lows to be taken out. I am definitely seeing prices to at least come within this, and then एक retracement आ सकता है यहाँ से. उसके बाद का मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, लेकिन मुझे इमीडिएट पता है कि ये तो जाएगा. तो अपना जिन जिन लोगों ने रखा है ना, एंट्री ली है भाई, टारगेट ये रखो. मैं बोल रहा हूँ जाएगा मतलब जाएगा, पक्का जाएगा. The way I was super convinced about this entry that it's gonna go and push down lower, and you can see it's doing the same. And even we were aware of this thing from here itself. Then we were waiting for a entry. We took first entry here, then I added somewhere over here. My first entry is still running, second entry got fucked up. फर्स्ट एंट्री यही के आसपास मैंने ली थी, जब इसने लिक्विडिटी हंट करा था यहाँ पे, एंड जब ये रिजेक्शन आने लगा था, आई एंटर्ड. सो दिस इज स्टिल रनिंग एंड दिस इज लाइक दैट ट्रेड इज गोइंग ऑन. रेस्ट विल सी. नो ट्रेड एग्जीक्यूटेड फॉर द फॉर द डे. भाई ये तो इसमें मैं गया नहीं. वन लॉट इज ChatGPT से पूछता है ना भाई,
सब्सक्रिप्शन ऐसे ही थोड़ी लिया है। भाई तो पापा वो दुकान वुकान बेच के यहाँ पे एक लॉट, मतलब यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लेवरेज ज्यादा है ना। वन लॉट इज 100 ounce, 100 ounce is, oh yeah, 100 ounce is basically 3.11 kg. Crazy, no? भाई कल, वैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेकन उसका अकाउंट MFFU? मैंने बोला था तब लिया था किसी ने MFFU. Yesterday I made like $1,500 in that. I need to make another $1,500. My average entry is, I mean, you are safe. You are safe till the time price don't take out this low. You are safe. सलवा तो पापा मुझे भेज देंगे, ये तो है भाई। देखो ये डेली और वीकली में देखोगे ना, इट्स शोइंग समथिंग that has more aggression. I still see that there's a fair chance कि हम एक शायद डीपर रिट्रेसमेंट में चले जाए. That is also very much possible. We've been holding and halting at this level for a long time. So if there is not enough juice available, it will just dump. लेकिन उतनी आगे की तो हमें सोचनी नहीं है. लेकिन ये जो भी कर रहा है प्राइजेस, ये इतना ऊपर जाके जो डम दे रहा है, ये बस इधर रुकने के लिए तो नहीं है. एटलीस्ट हम फिफ्थ लगा के ये चेक कर सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा. सो इफ़ वी सी, it's roughly around, I'm expecting, if not 1.618, of course not, 1.272 तो पक्का ये हिट करेगा भाई. 1.272 पक्का हिट करेगा. एक्चुअली 1.272 से नीचे जाएगा लिक्विडिटी के बेसिस पे. इट्स रफली अराउंड 1.414. या रफली अराउंड 1.414 वाला एरिया अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली ये लिक्विडिटी निकल जाएगी भाई. तो जिन लोगों ने ली है एंट्री, होल्ड करो बेटा, होल्ड करो. नेक्स्ट कमिंग टू गोल्ड. भाई गोल्ड में मेरा बायस वैसे तो हैवीली बेरिश है, बिकॉज आई एम सीइंग द स्लो टू गो. तो अगर लेट्स से प्राइसेस यहाँ से बाउंस करती है, ऊपर जाती है, वापस फेल करती है, आई विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स एंटरिंग इन शॉर्ट्स. बट अगर यहाँ से प्राइसेस होल्ड करती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो यहाँ से हायर हाइज हायर लोस का बनाती है, तो फिर आई विल एक्सपेक्ट ये जो लिक्विडिटी हमने मार्क करी है ये ब्रेक करे, एंड दिस वुड बी द एरिया जो मेरा डिसीजन मेकिंग वाला एरिया बनेगा. बिकॉज यहाँ पे अगर प्राइजेस बैरिश की तरफ टर्न होना चालू कर रही है और मुझे दिख रही है कि बैरिश आएगी, मैं शॉर्ट लूँगा. लेकिन अगर बस रिट्रेस करके अगर यहाँ से बाइंग होल्ड कर रही है, तो फिर भाई ये ऊपर जाएगा. लेकिन आई एम लाइक नॉट, आई वुड नॉट से कॉन्फिडेंट, बट आई वुड रियली, it's not even just intuition, because यहाँ पे you can also see there is a like loss in momentum. You can clearly see, it's quite visible कि भैंसो यहाँ पे नहीं है भाई स्ट्रेंथ. अगर लेट्स से अपन यहाँ पे देखें ना, जब प्राइजेस फटा था, ठीक है, कहाँ फटा था, यहाँ फटा था, ठीक है भाई. यहाँ पे हमें एक बार भी वैसा वाला साइन नहीं मिला कि लॉस इन मोमेंटम है. ये प्रॉपर ब्रेक कर रहा है भाई, फटा है, वापस फटा है, वापस फटा है. ऐसे वाला मोमेंट आया नहीं है भाई. अभी अभी तुम यहाँ पे भी देखोगे तो तुम यहाँ बोलोगे कि यार यू नो इट्स कंसोलिडेटेड एंड ऑल, बट इट्स इन अ रेंज. लाइक यहाँ पे अगर ये हायर हाइज हायर लोज नहीं बना रहा जैसे यहाँ पे बना रहा है, इट्स लाइक प्योरली अ रेंज, एंड देन इट ब्रेक एंड कंटिन्यू टू मूव.
तो यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है भाई, जब ये ऐसा करता है ना, अगर हम RSI भी देखे, मैंने अब तक ओपन नहीं किया है, लेट्स सी आपके सामने, अगर RSI ओपन करके अगर अपन देखे तो सी यू कैन क्लियरली सी अ डाइवर्जन हियर, देयर इज अ वेरी क्लियर डाइवर्जन विच इंडिकेट्स इट्स गोना फॉल। मतलब मैं RSI के बेसिस पे नहीं बोल रहा, मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि भाई ये गिरेगा और ये गिरना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ये बढ़वा ऊपर जाके गिरे या नहीं, ये स्वीप करे, ये हाई ब्रेक करे और फिर गिरे, या तो यहाँ से ही कंटिन्यूएशन ऑर्डर फ्लो बैरिश बनाए और फिर गिरे। डू यू एग्री नाउ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि अब ये नीचे क्यों जा सकता है। अगर तुम बस स्मॉलर टाइम फ्रेम देखोगे कि भाई 1 आवर में, हाँ भाई ये लिक्विडिटी स्वीप है, इसने हाई ब्रेक करा है, फिर दिस इज अ नाइस एरिया, मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करो और लॉन्ग लेते जाओ। भाई तुम हायर टाइम फ्रेम प्राइसेस भी तो देखो ना, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है भाई इसने हाई ब्रेक करा है, हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देयर इज अ लॉस इन मोमेंटम, सो इट्स वेरी क्लियर एंड एविडेंट कि प्राइसेस को रिट्रेस करना है। So Hum, to get into the inner circle, you basically have to open a referral account under me, the link for which I will be updating soon. So you can just open an account there and yeah, deposit a minimum of $300 in that. Your money would be safe and secure. That's my surety. A broker is not going anywhere.
Hello. Okay, now I guess it should not be a problem. So I was saying that all you have to do is just to open account under my referral and deposit a minimum of $300 in it. And after you deposit deposit a minimum of $300 in it. And once you're good with it, update the screenshot of your deposits and I'll confirm with Valtix backend. And yeah, you're good to join us and trade live with us. And also interact and communicate and ask your doubts. So basically, you can get access to me easily, where you can ask questions and everything. So open an account under my referral. I'm pinning the message here. You can just click on this link, open an account. They have app as well, so you can track there too. And make sure while depositing, deposit using your bank application, not your UPI. No phone pay, Google Pay, nothing. Just bank application for smooth deposit and withdrawal. Withdrawal भी bank में ही आएगा. So, and you don't really have to worry about your investments. It will not go. That's my assurity. Okay. So yeah, you can go ahead and sign up. Boys, this liquidity has been taken out. Buyers got induced. Right now, if you see, we are within the area of interest that we were willing to enter from. Like our London has just opened. London volatility has swept liquidity. Now all we need is to wait and see कि भाई एक्चुअल में बाइंग मोमेंटम या बाइंग इंटेंशन है या ये नीचे ही जाएगा. ठीक है, अगर बाइंग इंटेंशन आता है अपना पहला टारगेट ये रहेगा विच विल बी बेटिंग ऑन. एंड बाइंग इंटेंशन नहीं आता, गप चुप निकल जाएंगे मार्केट में से. भाई कुछ नहीं है तो गप चुप निकल जाएंगे. ठीक है, ये गंडमरा बहन छो इसमें अगर एंट्री मिलती है और आई नीड टू ऐड पोजिशन, बट ये जिस लेवल पे है आई डेफिनेटली डोंट वांट टू ऐड इट हियर. If it retrace, I'm fine with like looking at my position at loss or break even as well. But अगर ये ऊपर आता है, it's gonna be a sexy ass trade because I'm so sure कि ये जाएगा ही जाएगा भाई. I am dead sure of this thing कि भैंचोद ये जाएगा और ये जाएगा तो इधर तक जाएगा. I'm pretty sure of this. Okay, so let's see boys. Let's fucking see how it goes and where it goes. I started seeing some intentions coming in. What the heck, 6 people? भाई कंटेंट बनाना पड़ेगा लोग बढ़ाने के लिए भाई. कोई तो मेरी मदद कर दो कंटेंट में. इफ एनीवन इज गुड एट इट, प्लीज. इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द कंटेंट, प्लीज. इफ एनीवन कैन मोटिवेट मी, प्लीज. ये मेरा चश्मा वाकड़ा क्यों दिख रहा है? भाई इसकी अलाइनमेंट हो रही है. ठीक है, अलाइनमेंट हो रही है. लॉन्ग्स के चांसेस बन रहे हैं.
देव भाई, थैंक यू। अगर आई एम जस्ट चेकिंग द स्टॉप लॉस, ठीक है। We have not really entered yet. We have not really entered yet. But the plan and intention is to look for longs. Just waiting for it to give some more conviction. See, conviction अभी आ गया है मेरे को, ठीक है। अब बस मैं एंट्री का वेट कर रहा हूँ। अगर लेट्स से प्राइजेस ये इनएफिशिएंसी में टैप करती है ना, अपन घुसेंगे लॉन्ग्स। राकेश भाई, कैन यू प्लीज टेक्स्ट मी? आई विल जस्ट ड्रॉप माय कॉपी 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 का। एक मिनट, अभी लॉन्ग मैंने लिया नहीं है। जब मैं बोलूँगा रेडी रहना, आई मीन रेडी तो अभी रहना। राकेश भाई, इस पे आप मुझे प्लीज़ टेक्स्ट कर देना। लेट्स कनेक्ट। Also remember, this is the sort of counter trend that we are trying to execute. ठीक है, this would be a counter trend trade that we are trying to execute. But a fair one, not really random. We have a clear pool of liquidity. So overall, what we are expecting is price will definitely go down. But what we are just expecting is यहाँ से ऊपर जाए और फिर ये लिक्विडिटी हैंड करके फिर ड्रॉप दे। अगेन प्राइस की मर्जी है कि उसे यहीं से गिरना है, तो अपन उसे रिस्पेक्ट करेंगे। विल सी। आई एम जस्ट रेडी टू एग्जीक्यूट पोजीशन। या you can wait. Risk. Fine, enter longs right now. You can enter longs right now. I'm keeping just like slightly over 50 pips as my stop loss, and my target is just right here, just close to 170 pips. We have entered longs. As the price builds up, we will trail it. Okay. How many of you are with me and entered? This is a counter trend trade. Counter trade
काउंटर ट्रेंड ट्रेड. सो जस्ट मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, ज़्यादा रिस्क मत करना. ज़्यादा रिस्क मत करना, मैं पहले ही कह रहा हूँ. ठीक है, पहले ही कह रहा हूँ, अभी ब्रेक इवन पे है. अगर ज़्यादा रिस्क किया है तो एग्जिट कर लो. ठीक है. आई एम रिस्किंग क्लोज टू जस्ट 0.5% ऑन माई पर्सनल अकाउंट. I have not executed this trade on any of the funded accounts, but I have executed on my personal, giving it a decent amount of room for it to move. So that's fine. Slightly over 50 pips is what we have given. This trade is decent and logical. We have a clear pool of liquidity available in the upward direction. We are coming from a liquidity sweep. We have inclined, like we have waited for the order flow. Uh, Not really as a proper order flow, but yeah, some sort of conviction to kick in. So that's the reason this trade is very much logical. So continue to hold this one. Okay? Continue to hold and just manage your risk and you should be good. You'll be making another 2% on this one. I will be making another 2%.
सालो जब मैसेज डाला कि ट्रेड लिया है तभी 14 लोग आए हैं, अभी 11 लोग हो गए वापस। कमीने लोग हैं भाई। ट्रेड सही है वैसे इनको। भाई पीछे जाके रिवाइंड करके देखे लाइव में लिया अपन ने, साले तू आता तू भी लेता। सोच 160 170 पिप्स बनेंगे। 1 फकिंग 70 पिप्स। और हम होल्ड करेंगे पूरा भाई, हम होल्ड करेंगे। भाई क्या पीएनएल रनिंग है। जो भी रनिंग है उसका इंटू 3 टाइम्स तो बनाएंगे। अगर $20 रनिंग है तो $60 तो बनाएंगे। भाई कंटेंट बनाना पड़ेगा ना भाई पहले। विदाउट कंटेंट तो नहीं होगा। और कंटेंट हमसे बन नहीं रहा है। हम आलसी इतने हैं। ब्रो, people are selling dirt cheap shit for like 20 25 10 10,000 तो मिनिमम प्री रिकॉर्डेड वाले चीजें बेच रहे हैं भाई। जो चीजें हम 500 रुपए में लाइव में सिखाते थे वो भैंचो लोग 20 20 हजार में बेच रहे हैं। और हमारी जैसी इफिशिएंट इफिशिएंट वे से भी नहीं वो कम्युनिकेट कर पाते। इट्स वेरी स्केची बुलशिट सॉर्ट ऑफ कोर्स। ब्रो मुझे उतरना पड़ेगा अभी मार्केट में वापस। ब्रो मनी बॉल वॉज more about heavy investments in ads, but market dynamic has changed a lot. If we try to do what Moneyball has did, abhi we will miserably fail, because ads give a essence of scam. Oh, the community part. तो रील्स को अपन पुश कर सकते हैं एड्स थ्रू, लेकिन बाकी चीजें यार कंटेंट थ्रू ही करनी पड़ेगी। और कंटेंट को ही ऐड लगा के वी कैन जस्ट टारगेट टू द राइट ऑडियंस। बट इट द फॉर्म वुड बी कंटेंट ओनली, नॉट लाइक डायरेक्टली सेलिंग यू समथिंग। बस वो नहीं चलेगा अभी।
भाई इसमें है ना, आई एम थिंकिंग कि ये और एक बार हाई ब्रेक कर दे, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस टू दिस लो और स्लाइटली अबव दैट। विल सी। भाई एक्चुअली ये कर सकते हैं, बिकॉज अभी देखो मैंने रिसेंटली लाइक एपिक्स का भी पे आउट लिया। लाइक इट्स अबाउट जर्नलिंग, लाइक इट्स अबाउट पुटिंग एफर्ट्स वाला चीज भाई। आई एम टेकिंग पे आउट्स फ्रॉम फ्यूचर्स नाउ। रिसेंटली आई गॉट MFFU, so we can plan it in a way where just investing $77 and getting a minimum of payout of whatever amount जब ये आएगा वो। अभी तो मेरा पहला, हाँ 1500 का ऑलमोस्ट 50% मैं अचीव किया हूँ। आई नीड अनदर 1500 टू क्लियर, सो मोस्ट प्रोबेबली विद इन, लाइक आज क्या है, आज थर्सडे है, थर्सडे ही है ना भाई? हाँ थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन में आई थिंक आई कैन मेक दैट। और आई विल जस्ट ट्राई टू टेक इट स्लो, 300 अगले 3-4 दिनों में हो जाएगा। या फिर यू नेवर नो, एक दिन में ही हो जाए। सो वंस आई एम देयर देन ऑल आई नीड इज $100 के 5 दिन फॉर द पे आउट। एंड डेफिनेटली वी आर नॉट जस्ट ट्रेडिंग $100 के लिए, राइट? विल बी मेकिंग मोर and we will get 50% of it, so we can just create something around it and show people how they can just make it with the right skill set, just with a very minimal investment, and pull out money like crazy. We can do that too. I am not breaking even, or I'm not doing anything. We're up by fucking 50 pips, you motherfucker. It's trying to retrace, but I'm fucking holding my trade. I have not touched my trade. I'm just holding and willing to give a SL, because my goal is कि अगर ये इसके ऊपर जाए तो ही मैं ब्रेक इवन करूंगा, वरना नहीं करूंगा, वरना मैं लॉस ले लूंगा, ठीक है? देखा नहीं मैंने। इज इट प्रॉब्लम स्पेस में फॉर? उसके लिए क्या, लाइक यू नो क्रिएटर्स हु क्रिएट कंटेंट अराउंड इट?
EU, right? EU यहाँ पे EU आने दो भाई, ऊपर आने दो, बिकॉज अगर ऊपर आएगा तो मज़े आएंगे, इफ़ नॉट एनीथिंग एटलीस्ट इसको तो ब्रीच करना चाहिए, मतलब तभी एंट्री लेने का या फिर नई एंट्री बनाने का सेंस बनता है। Otherwise, entering here don't make sense. Like you will enter here, keep this as a stop loss, it will take you out, या फिर it will fuck around. We don't want that. We want this. This is an inducement. This is a liquidity that is supposed to be taken out. ज़्यादा बना लो तो बैन कर देते हैं. How much you got? How much you made from Titan Capital? Roughly around 21K. Solid. सही है भाई. और इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? Yeah, solid bro then. सही है. सही है, सही है, सही है. So you are more of a positional swing sort of trader, right? You hold your trades for long. ये कह सकते हैं followers. See, social influence does play a different game altogether. If you have numbers, they will be afraid ना कि अगर वो तुम्हारा अकाउंट बैन कर देते, और if you speak out loud on social media about the same, bad reputation would actually kill their this thing. The potential client जो convert होने वाले थे वो नहीं होंगे. So definitely जिनके पास numbers होते हैं, they would not mess with them. What are your view on futures? One of the best. Like, I think it's better than CFD firms. If you know how to take intraday positions, if you know how to scalp, it's great. कल का US 100 भाई जो सेक्सी चला है ना, solid. I just walked out with this very small profit.
But yeah, it was a great day. Yeah, boy. Dun, 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 dun. Yeah, ऐसा कुछ. बिल्कुल भाई करते हैं. Aryan, you still play football? See, my memory is good. I remember you play football and you were into some, like you were planning to get into some Rudraksh, some astrology related business. We had a conversation about this. See, it was great, like choosing trading over anything else. भाई लेकिन अभी की जनता वही है भाई, जिसके पास नंबर है वही अ, उन्हें वही सही लगता है. लाइक they don't really see. I'm not talking about everyone, but let's say I have only 400 followers and it's some dumbass person have 30, 40, 50,000 followers or even 1 lakh followers. They will trust him over me, even if I have more experience, even if I have did something decent uh, to the industry, to the markets. Still, हाँ भाई. भाई अपन को ये ऐसे जीएलएस के ऊपर का पर्दा निकालना पड़ेगा ऐसे. Branding should be good. Rahaz. एक ही लैम्बोर्गिनी रेंट पे कंटेंट बनाएंगे. साइड. ये फुटबॉल तो एंजॉयमेंट ही रह गया. भाई दुबई, मेरे को दुबई उतना फैसिनेट और एक्साइट नहीं करता जितना बाकी सारी. I would really think of moving out from here and staying in ऐसे Bali, Canggu and all this. It really fascinates me. Like सही लगता है भाई चड्डी पे घूमना.
हाँ भाई, करना तो पड़ेगा भाई. See, I have written 13 content ideas. हाँ, डर्ट चीप भाई, तुम 1.5-2 लाख में शेयरों वाली जिंदगी जी सकते हो. एंड आई वाज थिंकिंग, मतलब छोड़ो यार, ये बताना नहीं चाहिए, बट अरे मतलब मैं सोच रहा था भाई कि वी कैन एक्चुअली ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम इंडिया टू, लाइक वॉट एवर, वियतनाम, बाली, थाईलैंड, यहाँ पे जा सकते हैं हम भाई. मेरे, लाइक यू नो, आई वॉच अ लॉट ऑफ कैंपर वैन वीडियोज. सो गेटिंग अ हाईलक्स, हाँ हाईलक्स, एंड गेटिंग इट मॉडिफाइड, अंदर सेक्सी सा कैरावान वाला, ब्रो क्या कंटेंट बनेगा ना. बस सपने हैं भैंचो, पहले कंटेंट तो चालू करो. मॉर्निंग स्टार रोहित, या कंटेंट से, एक्चुअली सी कंटेंट से है ना, यू गेट सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी. लाइक भले ही ट्रेडिंग अगर तुम्हारा बुरा चल रहा है भाई, चलता है. कंटेंट, कंटेंट से पैसा बन रहा है भाई. यू नो, आई हैव ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट जो इंडिया के सबसे, लाइक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स है, जो पहले इंडियन करते थे, अभी वो फॉरेक्स में शिफ्ट हुए. एंड यू नो व्हाट, दीज गाइज हैव शिफ्टेड आफ्टर मी. Like I was doing this from 2021. These guys have maybe started after 2023, something like that. And bro, their monthly referral, okay, not monthly, sorry, daily referral, 15 to 20 thousand dollars. भाई तुम्हें लगता है वो बंदा ट्रेड करेगा? भाई, 15 से 18 लाख रुपए अगर महीने, दिन के, सॉरी, दिन के कमा रहा है, तो तुम सोचो. अरे मैंने तुम्हें बताया ना वो ट्रेड रूम का, ब्रो मैंने उसके 200-300 रुपए के पीएनएल उसने डाले हुए देखे थे. एंड अगले बंदे ने 6 महीने के अंदर मर्सिडीज, अब तो उसने जी वैगन ले ली. ब्रो कंटेंट इज द किंग, बट समहाउ इट्स नॉट रियली ड्राइविंग मी समहाउ. पता नहीं, सब कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट में हूँ. अपने पास स्किल भी है भाई, स्किल भी है अपने पास. अपन 300 लोगों के साथ लाइव ट्रेड करते थे भाई, तभी. भाई ठीक है यार. भाई उनका भी फेज है ना अभी, वो भी तो कभी डाउन होंगे, अब अपन आएंगे. तो शायद वो फेज अभी आ जाए, है ना. एंड अभी बहुत सारे चिंदी चिंदी क्रिएटर्स, मतलब नॉट चिंदी, आई वुड से, लाइक हर कोई अगला बच्चा उठ के ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट बना रहा है. हर अगला बच्चा उठ के ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट बना रहा है. स्ट्रेटजी वीडियो भर भर के डालो. आई होप यू गाइज आर होल्डिंग विथ मी. हाउ मेनी ऑफ यू आर स्टिल होल्डिंग? स्टिल क्या, होल्ड तो करना ही है भाई, होल्ड तो करना ही है. भाई ट्रेड ब्रेक इवन के आसपास ला दो. ट्रेल योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, और दिस लो. ट्रेल योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो.
चलेगा आर्यन, डन। गेट रेडी विथ मी कर दो। भाई मैं नीचे चड्डी पे हूँ, दिख रहा है क्या? भाई मैं ऊपर का ध्यान रखता हूँ इधर तक। और तुम्हें पता है मेरी बॉडी इधर तक ही अच्छी है, और मेरे लेग्स भी अच्छे हैं वैसे, ओके। तो अगर तुम देखो तो मेरा बस बीच वाला पोर्शन है ना, ये खराब है भाई। मेरी अपर बॉडी बहुत सेक्सी है, मुझे तो लगती है भाई, बहुत अच्छी लगती है। और मेरे लेग्स, भाई मैं, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने लेग डे कब करा होगा, बट ब्रो माय लेग्स, आई एम टेलिंग यू। मैं फुटबॉल भी नहीं खेलता आर्यन की तरह। बहुत खुद की तारीफ हो गई ना। वैसे मेरे आईलैशेस भी अच्छे हैं, लड़कियां कॉम्प्लीमेंट करती है। टन 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 टन। It's funny, इतनी funny, चुपचाप रानी, देख सर पीछे मुड़ के चली गई। भाई भाई पैसा लेता हूँ मैं ये सब कर। ये बहन का लौड़ा है यार, ये कैसे? इसलिए ना मेरे को न्यूयॉर्क ज्यादा अच्छा लगता है। मैसेज रिट्रैक्टेड कैसे आ रहा है मेरे को? यू डिलीटेड द मैसेज और डिड एनी मॉडिफिकेशन इन दैट? It is bouncing off from a demand. It just retraced to this area that we have marked. Slowly, gradually, it's gonna go up, is what I'm expecting and hoping. So let's see.
Bitch has moved like close to 70 fucking points and then dropped. I saw 120 के ज़्यादा तो मैं सोचता थोड़ा बहुत निकालूं, बट $100 तो आई मीन 100 पिप्स तो इधर कहीं बन रहा है. Let's see. I will be aggressive with my stops somewhere over here. I have trailed it, but right now मैंने आपको बोला यहाँ, but I have trailed it below this low. Oh, actually this low only, yeah. Not this. This is nothing. I've trailed it right here. इसके नीचे. भाई मैंने जर्मन इंडेक्स नहीं देखा यार काफ़ी टाइम से. जर्मन इंडेक्स है तो प्यारा. जब मूव करता है वैन का लोड़ा बस भागते जाता है भाई, भागते जाता है बस. सही है भाई. अभी रिट्रेस करने आ सकता है. अभी इस पे पहले फोकस करते हैं फिर देखते हैं. बट जर्मन इंडेक्स इज गुड. यूएस हंड्रेड इज कांस्टेंट भाई. यूएस हंड्रेड इज कांस्टेंट. टेस्ला में कल भाई मैंने पैसे बनाए. टेस्ला में हर बार जब मैं ट्रेड करता हूँ मैं लॉस करता हूँ. कल मैंने $400 बनाए टेस्ला में. टेस्ला में. टेस्ला में. चल 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 चल. भाई ये जब अभी ये वाला हाई ब्रेक करेगा ना, अपन रिस्क फ्री कर देंगे, ठीक है. अपन इसको इधर ला देंगे स्टॉप लॉस को अपने. ठीक है ठीक है. भाई तुम बताओ, ये जो बड़ी बड़ी ट्रेडर्स है अपने कोर्सेस में सच में अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं?
भाई अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी किसी की पता भी चल जाए, यू नो, द एज इज नॉट द स्ट्रैटेजी, द एज इज एग्जीक्यूशन। और पहली बात, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनमें से कितने बस कंटेंट क्रिएटर है और कितने ट्रेडर्स है, ये पता है तुम्हें? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टॉप ट्रेडिंग, दे आर नॉट इवन ट्रेडिंग। whatever money they have made, they are investing in different businesses. Do you know about this? Not everyone, I'm saying, but yeah, most of them are not even trading at the moment because referral का ही वो 15-20 लाख रुपए दिन का बना रहे। 15-20 लाख रुपए अगर किसी को मिलने लग जाए, क्यों कोई ट्रेड करेगा? $10,000-15,000 just for fun they trade, just to show something on life they trade, just to influence people to trade more they trade. एंड भाई तुम्हें गोदी में बिठा के भी कोई स्ट्रैटेजी सिखा दे ना, तुम तो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे इफ़ यू आर नॉट इन द राइट हेड स्पेस, इफ़ योर साइकोलॉजी इज़ नॉट ग्रेट। देर you can be a great analyst, you can anticipate directions with a lot of precisions, but if your executions is fucked up or executions are fucked up, you will still not make money. Now imagine just right in this case, okay, if your psychology is fucked, when it retrace you just assume like you break even, then again you entered maybe somewhere over here, and when you see again prices coming down lower, you again exited. Now again when it's pushing, you again enter. So you know, while doing all of this, you will firstly lose money to the broker, you will also incur losses, you will definitely incur losses while doing all of this, because not necessarily जब तुमने यहाँ पे एंट्री करी है तुम यहीं पे एग्जिट करोगे, तो होप पे वेट करोगे, जब ये नीचे आएगा तो मे बी पैनिक में तुम क्लोज कर दोगे। यू नो, द नेक्स्ट इज लाइक तुम्हारी औकात है भाई, तुम 0.1 के साथ ट्रेड करोगे और तुमने मारा है 0.5, तुम सोचो तुम्हारे गांड में जितना कूदा है उसके 5 गुना ज़्यादा वाला तुमने ट्रेड मारा, तो भाई फटनी तो है ना। तो फिर ये जो छोटा मुंह आया ना उसमें ये फट जाएगी तुम्हारी, बिकॉज तुम्हारा आइडियल स्टॉप लॉस तो ये है, लेकिन इतने में ही तुम्हारा जो लॉस लिमिट है वो दिख गया तुम्हें, यू विल ट्राई टू क्लोज इट, नो, देन इन गैम्बल यू विल अगेन एंटर, यू विल एंटर सम इन सम रैंडम प्लेस। अगर तुम ये कर रहे हो ना, एक बार आपके एग्जीक्यूशंस जो चार्ट पे दिखते हैं ना, वो एक बार चालू करके देखना, हाउ मेसी योर चार्ट विल लुक every minute, every second. If you are executing trades, even if your direction is right, but still you will end up losing money just because you lack execution. तो भाई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रेडिंग है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पास एक टेक्निकल एज होना चाहिए, बट टेक्निकल एज होना ही सब कुछ नहीं है, वो तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, वो तुम्हें पैसे ला के नहीं देगा। भले मैं भी तुम्हें गोदी में बिठा के सिखा दूँ, भाई नहीं होगा। Since 3 days I am doing the same disgusting position. Like you're holding it or you're doing the same mess that I just said. Buy, sell, buy, sell. And for me, I don't think trading would ever be mechanical for me. It's always, I fumble when I speak that word. Why this discretionary trading होती है भाई, mechanical नहीं। How to get out of this mindset? भाई इंपॉर्टेंट चीज़ों पे पहले फोकस करो, तुम हक कहाँ रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैंने बोला एग्जीक्यूशन, जो वो चालू करो और देखो तुमने कितना हगा है, ठीक है। तो तुम भाई एक ही रेंज में अगर तुम 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, तुम सबसे बड़े चूतिया हो। बुरा मत मानना भाई, तुम्हें सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कभी कभी वो चूतियापा करता हूँ, तो मैं भी चूतिया हूँ, लेकिन नहीं, एक्शन में सिजरर हूँ। फक ओके, वो छोड़ो। लेकिन फर्स्टली, इफ दैट रिस्क इज बियॉन्ड योर रिस्क एपेटाइट, क्यों ही लेना है भाई। जब तुम्हारे मतलब ऐसा हो गया है ना कि भाई पोटी होने के बाद भी तुम भैंसो आधे घंटे बैठे हो कि भाई और पोटी होगी,
मतलब तुम्हारे में जितना कूदा उतना ही तुम ये रिस्क लो ना। अगर तुम सिर्फ $10 का लॉस देख सकते हो तो $10 का ही स्टॉप लॉस लगाओ। ऐसे नहीं तुम अपना स्टॉप लॉस कॉम्प्रोमाइज करोगे वो चक्कर में। अगर लेट्स से तुम यहाँ पे एंट्री कर रहे हो और ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 60 पिप का, ठीक है, अगर 60 पिप का स्टॉप लॉस है तो यू शुड मैनेज योर साइजिंग इन सच ए वे कि भाई 60 पिप के स्टॉप लॉस के साथ मैं $10 लॉस करूँ तो उतनी ही मैं लॉट साइज मारूँ। अभी मिनिमम तो इसमें 0.01 है, तो उसके हिसाब से तुम मैनेज कर लेना, ठीक है। अगर वो तुम्हारे रिस्क एपेटाइट में नहीं बैठ रहा तो भाई वो ट्रेड तुम्हारा नहीं है, और बैठ रहा है तो लो। एंड इफ यू आर लाइक श्योर शॉट कि भाई ये जाएगा, तो ऐसा नहीं तुम 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क ले लोगे कि भाई 0.05 मार दूंगा मैं। नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 0.002 मार लेना। लाइक यू कैन स्लाइटली डबल योर रिस्क इफ यू आर श्योर शॉट कि भाई डेड श्योर ये जाएगा ये जाएगा। फर्स्टली दिस, नेक्स्ट इज you need constraints on the number of trades that you are executing, because problem वही होता है ना that हमारे इसमें भाई बाई सेल का बटन दिख रहा है, you can just fucking go and go beyond your risk appetite and fucking breach your account. It's very easy for you to go on tilt and do your mess, because right now it's your second nature. Your second nature is not good at technicals, but your second nature is very, very, very good at doing this mess, repeating the same sort of mistakes again and again. And trust me, trading, जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं होते 4, 5, 10, 15, 20 साल, दे आर नॉट बिकॉज उनके पास टेक्निकल एज नहीं है, या फिर कोई इतना चूतिया तो नहीं हो सकता कि भाई उसने कुछ सीखा ही नहीं है ना अपनी मिस्टेक से, या फिर उसने कोशिश ही नहीं करी कुछ देखने की। कुछ कुछ लोग होते हैं, आई हैव मेट एक्सेप्शन जस्ट लाइक दिस, ओके। मैं उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर तुमने टाइम दिया है मार्केट में, तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है, यू जस्ट नीड टू पॉलिश ऑन दैट एग्जीक्यूशन, बैक टेस्ट इट, इट विल वर्क। बट that is not where you will see profitability is when you understand what mistakes you are doing and you are not trying to do it like repetitively. Once in a while I also go on a tilt. I have also blown account very recently. It's fine, not like capital wala mera real funds, it's funded account, so funded account I don't fucking care, even if it go, it's fine. But I also go on tilt. I also have lost a lot of money in challenges in funded accounts. भाई ऐसे ऐसे भी हुआ है कि मेरा प्रॉफिट आने वाला, लाइक मेरा विड्रॉवल के लिए एक दिन बचा है एंड आई जस्ट मैच थिंग्स। भाई एक दिन बचा है विड्रॉवल के लिए, मुझे बस और कुछ डॉलर बनाना है एंड आई एम अप बाय लाइक $3,000 every fucking account, 2,300, $2,400 every fucking account, $2,800 every fucking account. Gone. Everything gone. It has happened. And sometime it happens, it's fine. But if that is happening, like if that is your second nature, that is something very concerning. Because you won't be able to break that cycle or get out of it. So you need to understand that you need tracking of these things. You need to understand what sort of mistakes you're making on regular basis and try to eliminate it as soon as possible. For that, you need a journal that helps you to understand how many trades you are taking, how much mess you are creating, and there should be a limit of how many trades, how many executions you can take. And as a human, how many wise decisions you can take in a day, like logically wise decisions. उसका कुछ तो सर्टेन लिमिट होगा ना भाई, तुम ऐसे थोड़ी कि 10-20 ट्रेड लिए जा रहे हो, बिकॉज एक टाइम के बाद दैट इज मोर ऑफ अ रेकलेस बिहेवियर दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. That is your basically your defense mechanism. That is your nervous system trying to protect you from कि भाई जो तूने किया है तू रिकवर कर सकता है अभी भी. That is nervous system trying to protect कि भाई तू वापस रिकवर कर लेगा एंड उस चक्कर में अकाउंट चला जाता है. Because you are afraid of again feeling that same feeling back जो तुमने अभी रिसेंटली फील किया है. कल जो तुमने रेकलेस ट्रेड किए थे, तुम वापस वो फील नहीं करना चाहते, तो तुम एक वो एस्केप ढूंढना चाह रहे हो कि एक फट से ट्रेड लूंगा बड़े लॉट साइज के साथ, लग रहा है कि यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा, मैं फट से ट्रेड ले लूंगा और वो वाली जो फीलिंग रहेगी मैं उसे मिस कर दूंगा, या तो ब्रेक इवन या तो प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा. भाई यही दिमाग में चलता है.
कि लॉस में हूँ तो भाई प्रॉफिट में क्लोज कर देता हूँ, ब्रेक इवन ही सही, कुछ तो क्लोज करूँ. यू डोंट वांट टू फेस दैट फीलिंग ऑफ यू एंडिंग द डे इन लॉस. बट हाउ इडियट यू आर दैट यू आर फाइन विथ फकिंग लूजिंग योर अकाउंट. You are fine with losing your account, but you're not willing to take a small risk and closing a day in negative. अकाउंट उड़ जाए चल जाएगा, दिन लॉस में क्लोज नहीं करना. क्या है ये? दिस इज कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस बाय द वे. आई हैव डिड these mistakes. तो पहली बात, जितना कूदा है उतना ही हगो. मतलब जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही लो. डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग. डोंट ट्राई टू कैच मूव्स अप डाउन ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सेंटर में, है ना. जस्ट हैव अ फिक्स्ड idea, trade plan, and just act on it. Nextly, limit the number of trades. पहली चीज रिस्क फिक्स होनी चाहिए per trade, how much loss you are taking for the day, and once you hit that loss, no matter if it is your just like 10 minutes in the markets, if you hit your loss limit, you need to get out of the markets. You need, it's a requirement. You need to get out of the markets, because after that जो होगा ना, वो अकाउंट बचेगा नहीं. और तुम्हें पता है ऐसे कभी कभी हुआ रहेगा कि तुमने लक बाई चांस वो अकाउंट रिकवर कर लिया, तो तुम्हारे दिमाग में है ना वो मस्त सी मेमोरी बन गई है कि मैंने उस दिन किया था, आज भी कर सकता हूँ मैं. उस चक्कर में भाई अकाउंट खत्म हो जाता. तो पहली बात, रिस्क उतना ही लो जितना तुम झेल पाओ. दिन का रिस्क एपिटाइट फिक्स करो, बिकॉज अगर तुम्हारे पास वो बाउंडेशन नहीं होता है, यू गो टू एग्रेसिव एंड you create a lot of problems for your own self, which you regret when you realize, when you sit back and when you realize, oh shit, what I did. क्योंकि जब एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तब नहीं पता चल रहा भाई. तब तो ये है कि ये होप है भाई कि जाएगा, ये लग रहा है कि लगने पे ट्रेड होते हैं. फिर तब ये नहीं देखा जाता कि सही में हो रहे हैं या नहीं, बस लगने पे होते हैं. भाई लग रहा है कि ये करेगा तो फिर कर लेते हैं. सिंपल. नेक्स्ट इज limit the number of trades. Decide a fixed risk appetite for the day for your own self. Once that got hit, like divide it into number of trades. Let's say like for now what I'm thinking is I will risk $500, $250 each, 2 trades on futures per session. नहीं, मैं एक ही सेशन ट्रेड कर रहा हूँ न्यूयॉर्क फ्यूचर्स में. आई विल ओनली टेक 2 fucking trades, both wrong, I am out. उसमें ट्रेडो वेट में सेटिंग है एक रिस्क लिमिट की. जस्ट पुट दैट रिस्क लिमिट एंड गेट आउट ऑफ द मार्केट्स. देन डोंट ओपन. भले ही भगवान आगे बोले भाई ये बहुत सही है, ले ले. नहीं, क्योंकि उसके बाद जो होगा ना वो तो रेकलेसनेस है. क्योंकि उसके बाद तुम रुकोगे नहीं. तुम 1000 पे भी नहीं रुकोगे, तुम 1500 पे भी नहीं रुकोगे, और 2000 पे भी नहीं रुकोगे. तुम रुकोगे जब तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाए. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. और बाकी यार मेरे को लगता है साइकोलॉजी इज जस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट. बिकॉज व्हेन यू गो ऑन टिल्ट, when you don't have that balls to take that loss and still you are in that loss, then you try to recover, and while recovering you do more mess और रायता फैला देते हो खुद के लिए. मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करो, यू शुड बी गुड. और ये जब हो रहा है ना, हाथ बांध के बैठो भाई ऐसे कि भाई या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट. और नहीं तो भाई तुम्हारा ऐसा है, तुम्हें बस बहुत एग्रेसिव होना है भाई. जैसे ही हाई ब्रेक हो जाए भाई, ब्रेक इवन पे ट्रेल कर दो. माँ चुदा है भाई, अभी भले ही ब्रेक इवन हिट हो जाए चलेगा, लॉस तो नहीं ले रहे ना. इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट की अच्छा इसने मेरे डायरेक्शन में गया, देन इट रिवर्स, अब नहीं भाई, अब मैं नहीं रहना चाहता ये ट्रेड में, इवन जस्ट गो. वैसे अभी अपना स्टॉप लॉस ये लो है, ठीक है, ये ख़त्म होगा, सेशन भी ख़त्म हो जाएगा, ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगा, अपन मिलेंगे फिर न्यूयॉर्क में. अगर ये चलते रहा तो सेशन तो ख़त्म हो गए लेकिन ट्रेड चलेगा. आई होप एवरीवन कैन रिलेट टू व्हाटएवर आई जस्ट सेड. आई एम प्रीटी श्योर, बिकॉज एवरीवन, either you are in the same phase, you are struggling with that, or you have already surpassed that. But भाई ये चीज़ें बहनचो, this is the consistent thing.
ये पक्का तुमने एक्सपीरियंस करा होगा, पक्का। तो भाई खुद के लिए लॉस में क्लोज करना बुरी बात नहीं है भाई, 100% विन रेट नहीं चाहिए अपन को भाई, 50% होगा तो भी चलेगा। 50% में भी पैसे बनते हैं, 1:2 1:3 लो, पैसे बनाओ। और फंडेड अकाउंट्स को अपनी बीबी मत बनाओ, है ना, बीबी बनाओ अपने रियल अकाउंट को। फंडेड अकाउंट को इस तरह वन नाइट स्टैंड की तरह यूज़ करो, 1 वीक स्टैंड की तरह यूज़ करो, 1 मंथ स्टैंड की तरह यूज़ करो, कि भाई उसे उसे एक जरिया बनाओ पैसे बनाने का, कि भाई फट 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 पैसे बनाऊंगा इससे। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम 10% रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड पे। ओह ये भाई पकड़े रखो ये ट्रेड अब, ठीक है। अब इतना वेट किया है ना, ट्रेल योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो। पे से एंट्री को इधर से मूव कर देता हूँ। ट्रेल योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो।
Trail your stop loss below this low. I've already trailed. So Shrikant, if you want to deposit in INR, check the pinned message. I have pinned something. So you can actually open that link and open your account there. And the important thing is, once you open an account, deposit a minimum of $300. And once you do that, you are allowed to join the inner circle where you have the access to the group and you can communicate and talk to us in real time about markets, about trades, about the problems that you're facing. So it's sort of free mentorship sort of thing, we can say, for now. So yeah, you can go ahead and join us using the link, deposit a minimum of $300, and you should be good. Yeah, ठीक है, ठीक है. Yeah, it does accept the payment through your Indian bank account, but the mode of payment should be your bank app. Like, use your bank app to deposit funds, not your UPI apps like phone पे, गूगल पे. उससे भी होगा, बट शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है. नॉट लीगल प्रॉब्लम्स, बट डिपॉजिट और विड्रॉवल में नहीं. डिपॉजिट में आई डोंट थिंक योर डिपॉजिट विल गो थ्रू. योर मनी विल नॉट बी डिडक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. So the best case scenario is deposit that funds using your bank account, and uh, your money would be safe. That's my assurity. The broker is not going anywhere, nor I'm going anywhere. So it's safe. You can use it. I have conviction in it, and you can hold me accountable for that. Okay. Now we have trailed our stop loss to a very very great extent. मतलब बहुत अपन ने कम room दिया है. Now let's see. Sure, Sashikant, definitely. Looking forward. And once you update, like once you are done with it, you can text me on WhatsApp. Like, I will update a message right now. So you can use this link to text me on WhatsApp. Almost 4 सेकंड 3 सेकंड का डिले है. हाँ, 3 सेकंड का डिले. Boys, अब जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा ना भाई, फटेगा ये. Still running 24 pips. ये अपना क्या कहते हैं.
This would be the last bet. इसके बाद let's see न्यूयॉर्क में I have trailed my stop loss below this low. If you haven't trailed it yet, please trail your stop loss below this low. The trade was logical, more than logical actually. It was a great trade. Not the greatest, but yeah, a decent one. Yeah.
and I still see, I don't really have much expectations अभी because मेरा risk अभी इतना छोटा है कि least bothered about it. अगर जाए तो चांदी चांदी है, it's great because the risk on the table is very small now. We have survived this mess. We have survived all of this. अभी एक अगर explosive आता है, it's gonna be fun. Then we will just trail our stop loss to break even and done. फिर छोड़ देंगे अपन screen. जैसे ही अपना ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए तभी. Let's see. Still holding this. Sure. So basically, the intention, I am personally inclined towards gold. Like, are you, Shashank? Firstly, are you in our WhatsApp group, the common group that everyone has joined? वो जो group है उसमें आप हो, शशांक? If your emojis is like, I'm considering no, but can you please type? Oh, you are not. Wait. Just give me a minute. I will be sharing a link to the one. Just give me a minute. भाई जो नए लोग वो ग्रुप में नहीं है, प्लीज join it. Invite. Copy link. I copied it. Yeah, copied. I'm only. Yeah, that group only. So, firstly, make sure you are joining this group. I've pinned it. I've pinned this message. Make sure you're joining this group. I'll be updating every single thing over there when is live, and before going live, update a message there. Okay. So just please make sure you you join this particular group, because I update everything before I go live. Nextly, I'll tell you the logic, and in that group itself, I have updated the logic behind this move or whatever my intentions are. So if you see in 4h time frame, if I just get rid of everything, after taking out this high, prices are lagging. There is not enough momentum for the prices to move up higher. So here my intention says that prices are supposed to fall. Prices are supposed to push down lower. But I mentioned before I execute that this is a counter trend trade. All I'm expecting is prices to reach within the premium area. So for me, the nicest pool of liquidity is this. I am considering and assuming this as a very great pool of liquidity. Of course, we do have pool of liquidity above as well, but the immediate one is this, and I am quite confident that prices will push up higher before dumping down lower. So that was the whole intention. I bet my trades. I bet on my trades based on my intention and what I am expecting from the markets based on technicals, not like मेरा मन किया इसलिए. So based on this, I am expecting that price will at least take out this high. At least. Eventually, maybe it will just push up higher, and the next possible move can be this, and then maybe a drop. Overall, I am expecting a selling price action, but I'm skeptical if ये यहाँ से ही गिरेगा या ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर गिरेगा. So that is a confusion. But what immediately I'm sure of कि भाई ये तो लिक्विडिटी जाएगा. अगर ये लिक्विडिटी जाएगा तो इनिशियली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये डिमांड से कुछ बाइंग आए तो, लेकिन देन आई मार्क दिस एरिया, आई स्पॉटेड दिस इनएफिशिएंसी इन 15 minutes, and then I was like, guys, we are seeing prices within this, and after prices reach here, we'll wait for a smaller time frame confirmation. What we have waited for is
a push up, invalidation of this fair value gap, less selling pressure, and as soon as we started seeing conviction here, our entry was exactly around this area, exactly around the array. Our entry was exactly around this area, and our stop loss was below, actually not below this low, it was roughly around 60 pips. ठीक है, अपना entry यहाँ हुआ and stop loss was here, and my target is above here, which is your liquidity level. This is a very clean pool of liquidity that I am expecting to go. Nextly, we do have very clean available supply area. If we just go to 3 minute or 5 minutes, you can clearly see that this is a very beautiful and mitigated piece of price action, which we can expect कि अगर price यहाँ पे आए कुछ तो हो सकता है. So this was the basic logic of the trade, expecting that this is counter trade and we are expecting price to reach within the premium, and then maybe if order flow shifts bearish from here, I'll take shots. But if it continue to hold bullish, I would not touch. I would not enter. So this was one of the discounted areas. It is reacting from the discounted area, and we do have clear pool of liquidity, and that's the reason we have entered in longs here. And I have not risked much because this is more of a counter trend trade, and I was fine with losing. And as I said, I was quite aggressive with my risk management, so that's the reason now trail your stop loss right here. I don't want to lose anything on this trade. It has fucking moved 70 pips from my entry. I'm not losing shit on this. Trail your stop loss below this low. Trail your stop loss below this low. I mean, at your entry. Trail your stop loss at your entry. And I still think it has potential to hold. So we'll see if it holds or no. But it's in a mess. It's trying to do its stuff. It's in a very shitty range. So we can come in New York and see what's gonna happen next. But I'm holding my positions, and I still have conviction if it holds, it can continue to push up and it can take out this and eventually take out this. शशिकांत, आपको समझ आया? लाइक आपके लिए मैंने इतना रैंट करा. आई होप आपको समझ आया हो. इसने नाइस लिक्विडिटी निकाली है 15 सेकंड में, डिमांड को मिटिगेट किया है भाई. अब ये फटना चाहिए भैंचो. अभी तो रिस्क फ्री है भाई, अभी तो लेजिट रिस्क फ्री ट्रेड है ये. दिस इज द फकिंग रिस्क फ्री ट्रेड. Oh God. भाई तुम सोच नहीं सकते मैंने कितने जुगाड़ से सेटअप बनाया. पता है ये स्ट्रीमिंग वाला किसी को देखना है? किसी को देखना है? किरीश का डांस दिखाओ, किरीश का सेटअप दिखाओ. आई एम I will show you. It's quite interesting. Okay, I'll show. Like the setup remains the same, but जो जुगाड़ मैंने लगाया ना, it's quite interesting. I'll show. Okay. I hope I am visible. I'll just increase. And I will change this camera setting to my iPhone. Camera. Okay. Cool. What? Unable to connect camera? What the fuck? Why? Bluetooth चालू किया. अब can you come and connect it? Oh, it's weird. Just connect AirPlay first. ये क्या होता है? सॉरी बट मैं समझ नहीं आ रहा भाई. Our trade is running well, so continue to hold. Anyone know? It's saying disconnect AirPlay first. I don't know what exactly it means.
Disconnect AirPlay first. AirPlay first. To turn off, either disconnect your control center or भाई ऐसा कुछ चालू ही नहीं है एयरप्ले वेयरप्ले। ये बना रहा है भाई मेरे को क्रेजी। छोड़ो, अब बाद में बताऊंगा। But just to tell you what's happening, I am taking output from my Windows device. As you can see, this is a Windows. अच्छा, as you can see here, this is Windows device. Okay. So on this Windows device, uh, I am streaming through Mac. So Mac Mini जो मेरे पास था, I'm utilizing it as a streaming device. लेकिन मेरे तीनों स्क्रीन ऑक्यूपाइड है और मेरी जो और दो स्क्रीन पड़ी है दे आर खराब and also I don't have enough space. So what I am doing is I'm using this this thing which is not connected to anything. Oh fuck, it is not connected to any wire. I'm using this to control my Mac Mini because उसमें एक ऑप्शन आता है स्क्रीन मिररिंग का. सो ये वायरलेस मिररिंग हो रही है मैक मिनी से मेरे मैकबुक एयर में. एंड आई एम यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, सॉरी माउस एंड कीबोर्ड टू ऑपरेट माय मैक मिनी. तो मैक मिनी का इसमें दिख रहा है. सो आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप एज अ जस्ट अ स्क्रीन फॉर माय मैक मिनी बिकॉज दिस फकिंग इडियट इज नॉट डूइंग प्रॉपर स्ट्रीम्स. तो इसको स्क्रीन की तरह यूज कर रहा हूँ. बिग ब्रेन्स. And the New York session start. I'm a nifty bank nifty person and doing cash trades. Very foreign to me. SMC is something you're talking here, but thanks to you. Yes, I have heard exotic terms like FBC and liquidity sweep. I mean, I would love to understand new keywords. Predominantly work in Indian markets and doing okay in cash market. Shashank, are you still with us? If yes, please let me know. Because I guess I. Okay, perfect. So, you know what? If you are joining us, we will also help you to understand every fucking concept that you are using and the accuracy with which we have predicted and anticipated directions, and uh, the accuracy with which we are also taking our targets. In fact, the last target was just right here, and after that, price no, it was not this actually. The last trade I have executed was here, and yeah, the target was exactly here, and from here prices start dropping. So exactly, I would not say I've exited here. I have exited here after this range I got taken out. But we are very good with our directions and just based on market structures. I would not say it's anything as just liquidity based or just SMC or just market structure. It is more of a not a mechanical way to look at the markets. So it's more of not really intuition based, but it's more of discretionary style of trading where whatever past data I have registered here, I'm using that data to execute trades and taking these sort of perfect trades where you can see that we are still in this trade. Markets have not kicked us out, and whatever we anticipated, it started working. We are fucking up by 95 pips. So you know what? If you executed 0.1 lot, you would end up making $100.
and like you can buy 100 like 0.1 lot in very small investment possible. So, and also we are getting consistent result through this. So I really request you, if you can just open an account under our referral. I'll help you with your technicals as well, and also you will get exclusive access to our inner circle where you can understand and learn things under me and execute trades just like this. If you check the risk reward, right now it's running at 1 as to 1.6. Eventually we're targeting close to 1 as to 3 point, actually 1 as to 3. So these terms are not really just flashy terms or uh, just some keywords as you mentioned, but these are the things that actually work in the market rather than using just support, resistance, trend lines, and EMAs, Bollinger Bands, RSIs, and VWAPs, volume profiles. Instead of all of those, if you invest your focus here in understanding the market directions and what intentions market have, if you have that directional edge, you can actually play in the markets much efficiently. And it's not just this, but you can do it the same way in Indian markets too. In fact, in cash markets as well. So yeah, looking forward for me to actually be an influencing factor in your life to learn something advanced and something that can help you for life, because this thing will really help you. And also those people who are still with me, भाइयों अगर तुम अकेले होते तो हक देते भाई ये सारे mess में. I hope you have holded your trade and I hope you are still in it. How many of you are still in this trade? I'm really like keen to know how, like what's your like status, PNL wala. If you don't mind, can you please let me know? Added more on that demand. Sexy. Perfect, perfect, perfect. $300. You have taken chota position, Akash? And fun fact, the trade is risk free. भाई मेरे को यूज कर लिया करो एज एन एग्जांपल. मनी ग्लिच. ये नहीं समझ पाया मैं, मतलब किस लिए एग्जांपल यूज कर सकते हैं. अभी मैं समझ नहीं पाया. फक, मैं दैट बैड. मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा. मैं समझ नहीं पाया भाई. आर्यन. ओह. हैव यू ट्राइड एक्सचेंज? भाई सिल्वर में स्प्रेड ज़्यादा होता है यार. सिल्वर में स्प्रेड ज़्यादा होता है. ओ योर मेंटरशिप गेव मी ओह ओके. हाँ भाई. आर्यन भाई को देख लो तुम. Shashikant, you can look at Aryan. Like Aryan is making fucking, like he recently made through one prop firm just like $21,000, and he's making more money. That prop firm decided to ban him. Also, Shashikant, like one lot is very huge sizing. So one lot, अगर तुम let's say यहाँ पे एंट्री करते हो और तुम let's say यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं ना, it's like $1,000. $1,000 is like 93,000 rupees. One lot is huge. So you should get started with either 0.01, 0.02 trading gold, 0.5, 0.05 to 0.1 or 0.2 in Euro USD.
बट इट्स नॉट लाइक फिक्स लॉट साइज पे काम करते हैं अपन. It depends on what is your risk versus what is your reward. How much you're willing to risk, how much you're willing to invest depends on that. But you can get started with just $200, $300, which is like 30,000 ke aaspas. That's more than enough for you to get that boost to get started. So definitely suggest open an account, invest a minimum of $300, 30,000 rupees, and get started with trading under my referral. And you can firstly learn, and also you can copy my trades and make free money. I think once this trade hit, our net for this year should be 4R, including losses. नहीं, हाँ, 4R, including losses. भाई अपना अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, ठीक है? ट्रेल योर स्टॉप लॉस बॉयज. भाई मैंने अलर्ट तो लगाया है, तो जब आएगा तब देखा जाएगा भाई. देखो अलर्ट लगाया है, तो दिस इज हाउ यू शुड लाइक स्टे काम. जो देखते रहोगे चुत्यापा करोगे, है ना? ये भाई ऑर्गेजमिक ट्रेड है भाई, ये तो ऑर्गेजमिक ट्रेड, ऑर्गेजमिक ट्रेड है भाई.
I can see a plus candle on. Yeah, but I can see this too. Maybe this is just the glitch from Oanda. If we try to check some other broker, here you can't see that headless candle, right? But the supply is quite evident. So instead of focusing on that, you should focus on what's currently present. And I guess the least that we can see is this as in जो मैंने ये mark करा है भाई $160 160 pips एक लॉट $1,600 भाई दो लॉट 3,200 को क्या बोलते हैं 30 31 32 ना $3,200 this is just the calculation game after a point everything is what risk and reward and money management and risk management everything revolves around it no don't expect that much just take this as a target गपचुप गपचुप मतलब शांति से मराठी में गपचुप गपचुप मतलब गपचुप चुपचाप चुपचाप ए बहन के लोड़े जाना जल्दी माँ की चैन
या इट्स क्वाइट पॉसिबल आकाश ये स्वीप करके जाए, लेकिन अभी ये बहन का रोड़ा बस नीचे आना चाहे, मतलब देखो नीचे जाए तो भी लॉजिकल है, बट तो फिर मेरा स्ट्रीम पे रुकना सेंस नहीं बनेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी lot of time. So I'm just thinking to call it a day. Anyways, your stop loss is at break even, so just make sure uh yeah, it's coming at a discount exactly to go higher. So continue to hold your trade. Anyways, your stop loss is at break even, so you are anyways risk free. Is it was already up by 100 pips, but it has more 60 pips room, यानी तुम additional और 50% of जो भी दिख रहे थे वो बना सकते हो. The condition is if you wait. Now it's up to you. Booking 100 pips is also not a bad thing. Right now it's running at 90. If you want to take half of your partials, it's fine. If you want to take half of your positions off, it's completely fine. So it's your choice. You can take your partials at 90 pips. I'll just note it because ये वापस break बन जाए 90 pips पे partials ले लो, ठीक है. 90 pips पे first partial ले लो and rest book at 160. Okay, so yeah, that was about it. I will be seeing you all. I'm personally holding it entirely. I'm personally holding it. Okay, so that was about it. I hope you enjoyed the session and your time with me, and yeah, that was about it. I'll be seeing you all in the evening. Till then, bye bye, take care, and have a great day ahead. See you. I am holding my trade personally. It's up to you if what you want to do, but 160 pips pretty sure 101% ही जाएगा. ठीक है, bye bye, take care, and have a great day ahead. See you.